Good morning, good morning, good morning, students. On the special occasion of Ram Navami Beda, we are going to start with accounting for GST. Is very important. So today is very important day. बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं सब लोग और आप और मैं पढ़ाई करने वाले हैं. So you and me, beta, we are going to do study. Okay. So let's start with the session. Say good morning in the comment section first. And before starting any session, you are aware that today's session is very important because we are going to start with the new part which is introduced by the Institute of Chartered Accountants of India in your syllabus. So आपको आज बहुत important session देखना है accounting for GST का. So friends, try to understand today's session beta. It's newly introduced by the institute. So please have 100% focus while doing beta our session. Okay, so learn this session, very important session beta. Yes beta, Jai Shri Ram. Okay, and आज हम लोग करेंगे, आज का सेशन है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. सो ऑल ऑफ यू. यस, सो अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, सो वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग फॉर जीएसटी. चलिए, सो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की. Everyone. So accounting for GST, before starting today's session, first basic rules of accounts: debit the debtor, credit the creditor, debit the receiver, credit the giver is a personal account. Traditional approach: real account, debit what comes in, credit what goes out in nominal account. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. But if you don't want to follow traditional approach, you can go by the modern approach: asset debit balance, liability credit balance, expenses debit, income credit, and loss account has a debit balance. Okay. चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख देना बेटा. यस, फटाफट फटाफट फटाफट. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. एंड आर यू इंटरेस्टेड बेटा to understand the new concept of GST? How many of you have already this knowledge? Beta, we are not going to do GST concept, returns and all, because you have a separate subject. What is the expectation of the institute? So don't ask me, sir, 2P kya hota hai, GST return, GST A1 kya hota hai. So I'm not going to discuss that point over here. I'm going to discuss only accounting for GST, which is very basic level. And institute wants that you should know this concept while understanding the GST part, because nowadays, while passing entries, GST input, GST output is very important. So what is exactly GST input and output, that we are going to understand in this subject. Yes, sir. I'm very new here. Yes, Mr. Bikash. Can I start watching from today? Beta, I think you watched my previous sessions. And if you haven't watched previous sessions, beta, it's my request to you. So go through my all basic concepts. So basic concepts से आपको और मजा आएगा. Varun ji saying, sir, I'm from Dubai and I don't know what about GST, beta. Yes, don't worry, beta. GST, I will explain it in very simple way. Okay. So remaining students, beta, say good morning. Neha Kumari, Varun ji, Mansa ji, Manoj, Maurya, Divya, नीलम, नित्यश्री, आनंद जी, विकास, अनुष, अंकुश, मौर्या, बहुत सारे स्टूडेंट है आज तो. यस यस, त्रिपाठी जी, मिस त्रिपाठी, भावेश भाई, ये मुझे कुछ कॉम्बिनेशन नहीं समझा, पर ठीक है. चलिए, सो जीएसटी का सेशन चालू करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड इट. अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, बहुत मेहनत की है मैंने आपके लिए, बहुत मेहनत की है. Yes, beta, because then don't worry, beta, you can attend today's session. Welcome to ICAI classes for live session. And it's always recommended that you must see all live sessions instead of recorded one. But if you have any emergency, you can go with the recorded one. Okay. But many students, they are not aware about today's session, I think so, because they thought that today is holiday and they are celebrating. But beta, please, please, please don't miss a single session, because GST session is really very important. और आपकी प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप सबको. ओके, ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. So accounting for GST. Now GST is the indirect tax.
Indirect tax and direct tax, but I'm not a right person to tell you the difference because you are already aware about the direct tax versus indirect tax. Once I will explain it in English and then a bit I will explain it in Hindi also. Don't worry. So, okay, first one, while understanding the GST concept, let's try to understand. First, you should know the basic difference between direct tax and indirect tax. But now I am earning these professional fees by uh, taking better tuitions also by providing these services to the clients. So these fees, better, I have to pay income tax on that, and income tax is called as direct tax because it is directly affect my income. So I have to pay that income tax. So directly my whatever I earned is better I have to pay on that. So this is a direct tax. Indirect tax, better when I go in the suppose if I go for one family picnic, and at that time beta I have to pay some service taxes. Now what is GST? Goods and service tax. What is goods and service tax? Why this is implemented? Pre GST, post GST. I will tell you this scenario, don't worry. So GST is a concept where you have to understand कि GST में आपको indirectly it is chargeable. So suppose in our restaurant, suppose we are paying GST about 20 lakhs, we have to take GST number, and that GST number beta we have to pay to uh, department, sales tax department को जो भी amount we are paying, so that amount is called as GST. So on extra 4% beta we are charging to customer. So every item of services or goods, government collects some money, and that collection of money is called as GST. Okay, so GST क्या होता है एक बार हिंदी में समझ लीजिए. GST डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स. ये दो टाइप के टैक्सेस होते हैं. डायरेक्ट टैक्स मतलब मैं जो भी कमा रहा हूँ, जो भी मैं कमा रहा हूँ उसके ऊपर डायरेक्टली मैं इनकम टैक्स भरूंगा, और उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स. तो डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है कि जो मैं कमा रहा हूँ, मतलब मेरे प्रोफेशनल फीस होंगे, इधर उधर से जो भी इनकम आते रहेंगे, इंटरेस्ट आता रहेगा, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट आता रहेगा, तो उसके ऊपर मुझे टैक्स भरना पड़ता है. भाई टैक्स नहीं भरोगे तो गवर्नमेंट आपको सुविधाएं कहाँ से देगी? और पूरे इंडिया में हार्डली कितने परसेंटेज है ये आप मुझे कल बताना. तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स में से इनकम जो है ना, वो गवर्नमेंट को बहुत कम आता है. तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनडायरेक्ट टैक्स से ये इनडायरेक्ट टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया. तो इनडायरेक्ट टैक्स क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कि यहाँ पे गरीब होने दो या पैसे वाला होने दो, कोई भी खाना खाने जाएगा तो उसको जीएसटी भरना पड़ेगा. तो वो सपोज पिकनिक को जाता है तो उसको जीएसटी भरना पड़ेगा, मूवी को जाता है तो उसको जीएसटी भरना पड़ेगा. गरीब या श्रीमंत रहेगा, कोई भी मतलब पैसे वाला रहेगा, कोई भी बेटा यहाँ पे जीएसटी से, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि उसको पेमेंट करना ही पड़ता है. ओके, पर डायरेक्ट टैक्स का कैसे होता है कि भाई सिर्फ एक रिच लोगों को ही डायरेक्ट टैक्स भरना पड़ेगा, एक बिलो लाइन के नीचे वो लोग टैक्स के लिए देखते भी नहीं है. तो डायरेक्ट टैक्स के गवर्नमेंट को रेवेन्यू बहुत कम आने लगा, और उस कारण की वजह से जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया. ओके, नाउ नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, goods and service tax GST is a comprehensive indirect tax. It's a comprehensive indirect tax. ये ध्यान में रखो. So ये गवर्नमेंट जो है वो आपसे comprehensive indirect tax लेता है. It has subsumed multiple indirect taxes in India such as value added taxes. तो पहले क्या होता था? Pre GST scenario that I will explain you. Don't worry. GST is levied on all stages right from the manufacturing to final consumption. So GST is not only for the retailer or last consumer. So GST, every party means manufacturer, he has to pay GST. Even wholesaler has to pay GST. Retailer has to pay GST. How? That I will tell you. This is not like cascading effect. Cascading effect क्या होता है? Cascading effect that I will explain you shortly. तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस समझ में आना चाहिए. सो यू गॉट द डिफरेंस, direct tax versus indirect tax? Say yes or no in the. So till now, what you should know, what is the difference between direct tax and indirect tax? I'm not a teacher of direct tax or indirect tax, just telling you about जीएसटी पार्ट. तो जीएसटी पार्ट का मैं कुछ पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. तो जीएसटी मेरे लिए भी बेटा इट्स अ न्यू सब्जेक्ट बिकॉज आई स्टडीड, व्हेन आई स्टडीड जीएसटी एट दैट टाइम देयर इज नो जीएसटी, बट एट दैट टाइम देयर वाज सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स वाला आदमियों में. वैट तो हर स्टेट का होता है. सो वैट इज नॉट एप्लीकेबल इन आवर सिलेबस, बट नाउ जीएसटी इज एप्लीकेबल इन योर सिलेबस. ओके, ठीक है.
हाँ बेटा, कस्टम ड्यूटी वगैरह होता है. सो डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स, टिल नाउ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग परफेक्टली. तो जीएसटी किसको पे करना है? जीएसटी कोई भी रहने दो, आम इंसान, आम आदमी को जीएसटी पे करना है. डायरेक्ट टैक्स किसको पे करना है? वेल्दियर जो होगा उसको ही पे करना है डायरेक्ट टैक्स. एकदम सिंपल है. But sir, if it's levied in all stages, isn't government earning tax on the part of same amount till final consumption? So what are you talking about? Suppose GST is payable on all stages. Means manufacturer is also paying, retailer is also paying, wholesaler is also paying, and consumer is also paying. So कितना सारा GST भरेंगे? इतना GST up to final consumption. So GST जो है same amount till final consumption नहीं होता है. Okay? No, beta. The government provides the input tax credit, ITC, ITC, ITC. So what is ITC that you have to understand? Income input tax credit. Input tax credit क्या होता है? आज मैं आपको explain करूंगा. What is ITC? So credit. Credit means what? Credit means income. So you can take the benefit of credit. Okay. So credit मतलब क्या? Income और लाइबिलिटी, ये दो हो सकते हैं. एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट आप लोग ले सकते हो. सो ये जो होता है वो हम लोग सीखेंगे. व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन ओनली ऑन वैल्यू एडेड ऑन ईच स्टेज. सर समझ में नहीं आया? सर नॉट अंडरस्टूड. प्लीज एक्सप्लेन थ्रू वन एग्जाम्पल. ओके, सो व्हाट इज द न्यू कॉन्सेप्ट? सर फर्स्ट वर्ड, whether they will pay all stages means what? Manufacturer will pay, wholesaler will pay, retailer will pay, consumer will pay. जितने भी बच्चे हैं बेटा, साइंस बैकग्राउंड होने दो, कॉमर्स बैकग्राउंड होने दो, आज का सेशन आपको सबको समझने आने वाला है. आज का सेशन सबको समझेगा, डोंट वरी. तो एक ध्यान में रखो, जो जीएसटी होता है बेटा, ये जीएसटी इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड आफ्टर दैट बेटा वी आर गोइंग टू सी दी एंट्रीज. एंट्रीज के लिए अकाउंटिंग नॉलेज लगेगा. But for understanding GST, any background person can understand it very easily. So one thing you have to understand कि there is some benefit you have to understand कि input tax credit का benefit will be given. Okay, ITC, not Indian Tobacco Company. It is ITC. Here is input tax credit. Okay, input tax credit. ये word याद रखना. So what is the new word? Yes, input tax credit. So my dear students, what is the input tax credit? Yes, that we are going to understand now. So let's understand what is a chain of indirect tax. Now I'm going to explain you very, very important point. Chain of indirect tax, chain of indirect tax, chain of indirect tax. A manufacturer, A is a person who is a manufacturer. Chalo, now you only tell me, yeah? You only tell me. A is a manufacturer. He sells goods to B. B is a wholesaler who sells goods to C, who is a retailer. And he sells goods to end consumer D. So A is manufacturer. B is wholesaler. C is retailer. And D is consumer. Got the concept? A, B, C, D? Yes. Yes, beta. ठीक है? So assume A cost ₹1,000. A को 1,000 रुपए का माल का खर्चा है. ए ने मैन्युफैक्चरिंग किया. His cost is ₹1,000 and his other cost, purchase cost. Now he does not have any purchase cost. Why? Because he incurs manufacturing cost. So uska purchase cost is dash because he's a first manufacturer. Manufacturer always has a manufacturing cost. Whether he has to incur purchase cost, no sir. Who will he purchase it? B will purchase it from the manufacturer. He's a wholesaler. C will purchase it. He's a retailer. D will purchase it. Consumer. Okay. So manufacturing cost किसको होगा? सिर्फ A को होगा. Whether manufacturing cost was for B, C, D? No sir. B, C, D does not have any manufacturing cost sir. B, C, D को कोई भी manufacturing cost नहीं होगा. तो किसके लिए manufacturing cost होगा? A के लिए, सिर्फ A के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा. से यस और नो? यस और नो? यस बेटा, यस यस यस. सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज ओनली फॉर मैन्युफैक्चरर. ही डज नॉट हैव एनी परचेस कॉस्ट. क्लियर टिल नाउ? ओके सर. नाउ अदर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. सो सी,
Manufacturer will incur some other administrative cost and selling and distribution cost. Now, what is that? We have to understand it in the inventory valuation. So not now. So other cost plus profit, profit जो होगा उसका कितना है? It's of 500 rupees. So what is the total cost of him? What is the total cost of him? चलो, say it in the comment section. तो selling price कितना होगा? 1500 is his selling price because it is including profit. So 1500 is his cost plus profit. So that is the selling price. So selling price कितना हुआ? बंदे का सेलिंग प्राइस है 1500 रुपया. बंदे का सेलिंग प्राइस है 1500 रुपया, 1500 रुपीज विदाउट जीएसटी. सर विदाउट जीएसटी ये बिल है, विदाउट जीएसटी ये बिल है. ओके, चलिए बहुत बढ़िया. विदाउट जीएसटी ये बिल है. एड 18% जीएसटी. चेन थोड़ा सा पुढे गए. यस. सो हाँ, ओके. सो नाउ 18% is a GST. So tell me, now 18% we assumed it. Yes, 18%. So 1500 into 18%. What is the amount, beta? GST amount, what he paid? GST, he has to collect it from B. So what he will collect from the B? Yes, beta, tell me. What is the amount? 18%. चलो 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 जल्दी बताओ. 1500 के ऊपर कितना आएगा सर? 270 rupees. So his invoice value, जो बिल पे अमाउंट दिखेगा, whatever the bill amount. एक आधा बिल आए करें, रिलैक्स से एक आधा छोटा बिल, सेल्स एनी बिल. हाँ ठीक है, स्कैन करून पाठ. ओके, विथ जीएसटी. इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू 1770, 1770. ओके, सो 1770 will be the invoice value जो बिल पे दिखेगा after GST. what you have to pay? Yes. So what is the GST he has to pay? He has to pay government को, he will pay output tax. So what is the tax? Output tax. What is this called as? Sales. Sales means output. Buy sales matlab output. So what is the output tax? Output tax is on sales. Input tax is on purchase. Purchases comes in. So input tax. Output tax when there is a sales. Okay. So if you are selling it, you have to pay output tax. So what is the output tax? What he has to pay? 270 rupees. Government को pay करना है. What he has to pay? It is while on sale. So output tax, why it is called as output tax? Because he has to pay it to government. So he collects it from the person and he will pay it to government. So he will collect it from the B and he will pay it to government. And whether any input tax credit is available? No, sir. So what is input tax credit? ITC. तो उसको कुछ benefit मिलेगा क्या? कि उसने, अरे भाई ये तो फर्स्ट पार्टी है. So he doesn't get any benefit. Explain करने वाला हूँ हिंदी में. So don't worry. So input tax credit is 0 and net tax payable is 270. देखो बेटा, 1000 रुपए का माल परचेस किया, मैन्युफैक्चर किया, नॉट परचेस. ए जो है ये मैन्युफैक्चरर है, 1000 रुपए का माल उसने मैन्युफैक्चर किया. समझ में आया? यस सर, 1000 रुपए का माल उसने मैन्युफैक्चर किया. उसके ऊपर उसने अपना प्रॉफिट लगा दिया 500 रुपया. कॉस्ट भी था और प्रॉफिट भी था. 500 रुपए का ये अदर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, 500 रुपए का उसका अदर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी है. तो अभी सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 1500 रुपया. वह 1500 रुपए पे वो बेचेगा क्या? हाँ भाई 1500 रुपए पे बेचेगा. बट गवर्नमेंट, बेटा now please don't go miss Tapaswini ji by case to case. Sugar industry, alcohol, I'm not going to explain you. You have very basics of GST in this chapter. So आप लोग बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाइए. I just want to explain you about output input tax. Okay? ठीक है? तो आउटपुट इनपुट टैक्स आपको याद रखना है, बस बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाइए. Yes. So those who are already done this in the practice, beta, for you it's very simple. This is for those students who does not have any idea about GST. So institute introduce this topic only for entry purpose. Okay? तो बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाइए. So 270 rupees is net GST payable. तो देखो 1000 रुपए का माल खरीदा,
₹500 का कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, ₹1500 आपकी सेलिंग प्राइस है। ₹1500 में से हम लोग सामने वाले कस्टमर से बोलेंगे भाई ₹1500 मेरा है, पर गवर्नमेंट है ना हमें बख्शती नहीं है, तो मांगो ना धन्यवाद। बस दूसरा करना के बिल। So 1770 is the invoice value. 270 rupees is the GST. 18% GST, 270 rupees. Invoice value is 1770. Output tax, what you have to pay is 270. एक याद रखो, ₹1500 के ऊपर 18% के हिसाब से 270 रुपीज ये आपको पे करना है गवर्नमेंट को। 1770 ये इनवॉइस वैल्यू है, ये याद रखना। चलो, सो गवर्नमेंट को कितना पे करोगे? 270। नाउ यू ओनली टेल मी, नाउ व्हाट इज द परचेस कॉस्ट? 1500। व्हाट इज द परचेस कॉस्ट? 1500 प्लस ₹300 is other cost plus profit. So what is the selling price? 1800. 1800. Okay. So 1800. And now what is the GST value? See, without GST ये 1500 जाएगा। So ये 1500 इधर आया, purchase cost for him without GST, excluding GST 1500, other cost 300, 1800 into 18%, 324. So 2124, 2124. Okay, 1800 plus 324. See, 1500 is a purchase cost, plus 300 is other cost, 1800 is a selling price. सेलिंग प्राइस के बाद 18% इज अ जीएसटी, 324। 324 जीएसटी के ऊपर 2124 आया, सो 2124, सो 324 is payable to government. But wait. Mr. B already paid. What he already paid? 270 rupees. He already paid. No. 324. So he does not have to pay tax on tax. He will pay only 324 rupees. Out of that, he can claim. He can claim. What he can claim? I already paid 270 rupees. गवर्नमेंट जी, मोदी जी, 324 रुपीज हम लोग आपको पे करेंगे। बराबर है, मैंने 1500 का माल लिया, ₹300 का माल मैंने उसके ऊपर खर्चा किया, प्लस प्रॉफिट है, सो ₹1800 की मेरी सेलिंग प्राइस है। मैं आपको 324 रुपीज पे करूंगा। कितना पे करूंगा? 18%, 324। तो मेरे लिए 2124 इज अ सेलिंग प्राइस हुआ, इनवॉइस वैल्यू हुआ, नॉट सेलिंग प्राइस, इनवॉइस वैल्यू। मेरे इनवॉइस पे आफ्टर जीएसटी 2124। पर गवर्नमेंट मोदी जी, मैंने 324 रुपीज आप मुझे पे करने के लिए बोल रहे हो, मैंने मिस्टर ए को उसके बिल में ऑलरेडी 270 का बिलिंग था जीएसटी का, तो मुझे प्लीज 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 क्रेडिट दीजिए। मैं पूरा नहीं भरूंगा और इसके रिटर्न्स भरने पड़ेंगे। ये जो अमाउंट्स है 324 और 270, तो गवर्नमेंट को जब आप 54 रुपीज पे करोगे, सो गवर्नमेंट आपसे क्या चाहेगी? भाई रिटर्न में भर दे। Yes, fill up returns so that we can understand now what is your purchases and what is your sales and how you have claimed that benefit of GST. So that returns you have to understand it in your practical life. आपके practical life में आपको ये सोचना है। कोणतं पण दे, any GST bill. Okay. So my dear friends, now you have to understand for C. So now tell me what is the purchase price for C. Now you can understand it very easily. 2124 out of that 324, 324 में से 270 we already paid. So it's simple. Now you think for C. C के लिए what is the purchase cost? What is the purchase cost for C? C के लिए purchase cost क्या है? C के लिए परचेस कॉस्ट क्या है? C के लिए परचेस कॉस्ट क्या है? 1800। वाह रे वाह मेरे शेर, 1800। We will assume other cost plus profit 200. Now you only tell me
What is the net GST payable for C? Chalo, let's see who is answering very fast. 1800 and 200 is your other cost plus profit. So what is the net GST payable? Who is calculating? Who is calculating? Chalo. 1800 is the answer, not 1854. Nilam ji, you are wrong. 1800 excluding GST. ये होता है. So selling price excluding GST will be purchases excluding GST. तो 1800 रुपीज ये सी के लिए परचेस कॉस्ट है एंड हिज अदर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज 200. नाउ यू ओनली टेल मी व्हाट इज द सेलिंग प्राइस. नहीं बेटा, बी ने 1770 पे किया. बी पेड 1770. ऋतिक, बी ने 1770 पे किया. सो आंसर गिवन इज, किसी किसी ने 360 लिखा है. सो करेक्ट आंसर, let's check the correct answer. Who wrote very fast? Let's check it. 1800 plus 200 means 2000 is your selling price. 18% is GST, 360 rupees. 360 is the GST amount. Okay. So C has to pay 2360. But C won't pay 360 to government. C has to collect 360 from the customer. Sorry, what I said? Yes, collected, not paid. 360 collected from the D. Okay, so D से उसने 2360 collect किया. But what he can claim? He can claim 360 में से government G 324 already paid. So I will pay only 36 rupees. And who has given the correct answer of 36? देखो वापस से एक बार बताऊंगा. 36 is the correct answer. 36 is the correct answer. And who wrote it very fast? Rani Prasad. Rani Prasad answered very fast. 36. ठीक है. And D जो है वो 2360 ये पे करेगा. So D is the ultimate consumer. He will pay 2360. So total GST payable to government by A 270, by B 54 and by C 36. So total government को पे किया है 360 rupees. How? So 2000 rupees is the selling price excluding GST. So GST को ऊपर 2000 के ऊपर सामने वाले को 18% government will charge 360 rupees. But 360 rupees is not paid by the single person. 360 rupees is paid by manufacturer plus wholesaler plus retailer. ये होता है GST का chain. One more time, beta, I will explain you this concept. One more time because I know. Yes. One more time, beta, I will explain you GST concept. See, देखो ये है मैन्युफैक्चरर. अभी मैन्युफैक्चरर जो है उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ओके, 1000 रुपया है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस अदर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट is 500. Okay. So what is the selling price? Selling price is 1500. So it is a selling price. Now this is a selling price without GST. Without GST. See, 1500 is a selling price of manufacturer. पर मैन्युफैक्चरर क्या बोलेगा? मैन्युफैक्चरर बोलेगा कि भाई आई हैव टू पे टू गवर्नमेंट. मिस्टर बी, on 1500 government will take from me 18%. So 1500 into 18%, 270 rupees government will charge me. So what is my invoice value? So what is my invoice value? 1770.
बट 1770 में से गवर्नमेंट को जाएगा 270 एंड इन द पॉकेट ऑफ मैन्युफैक्चरर ओनली 1500. Got the concept? Very simple. So here government will take 270 and manufacturer will take 1500. Okay, including his profit. Okay, so he shifted that 270 ka burden to Mr. B. So whatever he has to pay to government, so this is he will pay to government. So he has to pay output tax. Bye tax. I will pay you. I will pay you. Okay. Output means it's a liability. Output. So this is called as liability. Okay. 270 rupees की liability है. Okay. Say yes or no. Yes, sir. So till now any difficulty बेटा? Okay. समझ में आया? ठीक है. 270 rupees is paid to the government. Whether he will get any benefit of ITC, input tax credit, no, because he is a first party in a chain. First party को कहां से available होगा? So he's a first party, so input credit is not available because he is a first person who collected the money. वो पहला इंसान है जिसने गवर्नमेंट को पे करने के लिए पैसा लिया होलसेलर से. अभी आते हैं होलसेलर बी के लिए परचेस प्राइस कितनी है? Purchase price is 1500. He will take without GST. Okay, he will take without GST. Without GST, he will calculate his profit. Now, what is his other cost plus profit? He added 100 rupees in that wholesaler. So wholesaler cost is very easy. So 100 rupees and 200 is his margin. 200 rupees is his margin. Okay, 200 रुपए उसका profit है, 100 रुपए की उसकी cost है. Other cost plus profit. So how much is the sales value? 1800. But wait. 1800 के ऊपर he is going to collect tax. 1800 into 18%. So what is the bill amount? Invoice price 1800 plus 324. 2124. 2124. So it's his liability. It is a GST he collected. So what is the GST output? GST output is 324. Okay. Output means his liability. Output tax. His liability 324. उसकी liability कितनी है बेटा? 324. Understood the concept? But what he can tell, government G, Mr. A, he already paid you 270 rupees. Please give me a benefit of that. Because why I should pay 270 once again? मैं 270 वापस क्यों भरूं? मैंने already भर दिया उधर. 270 rupees he already paid. Manufacturer. So in this 1500, already this 270 is included in this 324. Sorry, not in 1500. In this 324, already this 320 GST is included. So he will pay to government only his liability to pay to government is only 324 minus 270, 54 rupees. Understood? Sir, finally, now this 1800, retailer will purchase. So for retailer purchase, because 324 is of government, not purchases. Okay, 1800 is government ka price hai. Because he can take a benefit. Now what is his profit? 50 rupees is other cost and 150 is his profit. His profit is 150 and 50 rupees is his cost. So what is the sales value excluding GST? Sales value is 2000 to the customer. Out of 2000, he will collect 360 from the end consumer. So end consumer ka billing hoga 2360. But now out of 360, so 360 he will pay to government.
But wait. He will tell government 270 paid by the manufacturer, 54 paid by the wholesaler. So we already paid 324 rupees. Now what we are going to pay? Only 36 rupees. Okay. And 36 rupees we will pay. So he will pay to government only 36. So 270 paid by the manufacturer, 54 paid by the wholesaler, and 36 paid by the retailer. So total GST paid is 360 and the final amount is 2000. So 2000 pay 360, but not paid by one person, but paid by three different persons. And everyone is taking the benefit of प्रीवियस पर्सन. ओके, सो इसको बोलते आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट. उसका बेनिफिट लेना. एंड द फाइनल कंज्यूमर के लिए दिस विल बी 2360. फाइनल कंज्यूमर के लिए कितना हो जाएगा? 2360 is the purchase price, because final consumer will take any benefit. No. So final consumer बोलेगा मेरे तो जेब से गया. I cannot take a single benefit. Okay. So 360 final consumer नहीं pay किया. Who paid this 360 rupees? Final consumer. But government not collects it from D directly. Government collects it from A. Government collects it from B. Government collects it from C. Everyone has to file this return. CA Inter. Okay. When to understand it? In CA Inter. How to file, in articleship period, which returns, how to decide rates. It doesn't need it in the foundation. कितना क्या रेट बीट है, HSN वगैरह. Okay. नाउ एवरीवन इज क्लियर बेटा. जीएसटी खत्म ना, एकदम दिमाग में बैठ गया ना जीएसटी. तो आपको क्या क्वेश्चन है? हु इज पेइंग जीएसटी? हु इज पेइंग जीएसटी? अल्टीमेट पर्सन हु इज पेइंग जीएसटी? अल्टीमेट पर्सन हु इज पेइंग जीएसटी? चलो बेटा प्लीज हेमंत जी, जो इररिलेवेंट क्वेश्चन है आई एम नॉट गोइंग टू आंसर इट. यहाँ पे ए बी और सी ये बी टू बी में आता है, एंड सी एंड डी का रिलेशन बी टू सी, मतलब बिजनेस टू कस्टमर होता है. एंड कस्टमर. हाँ जी बेटा, बस इतू सच चाहिए आपको. व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज आउटपुट. ओके, फाउंडेशन लेवल में एकदम इजी छे. हाँ, ultimately consumer is paying all 360 rupees. But tell me, to government, consumer is paying or different parties are paying? To government, who will pay? To government, directly consumer will pay, or to government, who will pay? So my question to you, ultimately who pays? Yes, yes, ये correct है. D is paying this 360 rupees. 2000 के ऊपर 360 D पे कर रहा है. But how this 360 is collected? Directly from D, or government is considering it from A, B, C? Yes, my second question to you. अरे वाह मेरे शेर लोग. अमर्त्य चक्रवर्ती. सर डिफरेंट पार्टी. ए बी सी. लव यू गाइस. ए बी सी. क्या मस्त समझाया मैंने जीएसटी. ऐसा मुझे ही लग रहा है. आई एम नॉट ए जीएसटी टीचर. ओके, बट आई थिंक आई क्लियर योर ऑल कॉन्सेप्ट्स. ऐसा मुझे क्यों लग रहा है? सो ए बी सी. माई थर्ड क्वेश्चन टू यू. यस, हु आंसर्ड इट वेरी फास्ट? ए बी सी. डिफरेंट पार्टीज. अमर्त्य ने सबसे तेज आंसर दिया. यस, जीएसटी इज पेड बाय A 270 rupees, 54 by B, and third one is C. Yes. Who takes the benefit of ITC? Who takes the benefit of ITC? Input tax credit. It's manufacturer, it's wholesaler or retailer or consumer. या
मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, कंज्यूमर, सॉरी रिटेलर, और मैन्युफैक्चरर नहीं होगा, कंज्यूमर नहीं होगा, हु टेक्स द बेनिफिट ऑफ आईटीसी? हु टेक्स द बेनिफिट ऑफ आईटीसी? आईटीसी का बेनिफिट कौन लेगा? ए बी सी डी, बी सी, या ए सी, ए बी सी? हु इज टेकिंग द आईटीसी बेनिफिट? मोबानी पॉल, रॉन्ग छे बेटा, रॉन्ग, रॉन्ग। रवीना आंसर इट वेरी क्विकली। रवीना ने सबसे तेज आंसर लिया। आईटीसी का बेनिफिट कौन लेगा? आईटीसी बेनिफिट ए को मिलेगा ऐसा लिखा है मोबानी ने। बेटा ए तो कुछ आईटीसी का बेनिफिट ही नहीं लेता, इज अ फर्स्ट पर्सन इन द चेन। आईटीसी का बेनिफिट बी एंड सी विल टेक, क्योंकि बी ने पे किया है ए को, सो ही विल टेक दैट बेनिफिट। सी ने पे किया है बी को, तो ही विल टेक दैट बेनिफिट। सो आईटीसी बेनिफिट, अरे 0 to 73 24 सामने आंसर था। आईटीसी 0/A, तो हु विल टेक अ बेनिफिट? Only B and C will take the benefit. Only B and C. The correct answer is only B and C. अरे सामने तो था ना, इधर इश तो था। आईटीसी का बेनिफिट, अरे ए को कैसे होएगा? ए तो पहला है ना, ए तो गवर्नमेंट को पे करेगा, पहला चेन में है। एकदम सिंपल एग्जांपल दूं क्या? एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं, तो तुम्हारे दिमाग में फिर बैठ जाएगा। ठीक है, देखो एकदम सिंपल एग्जांपल। एज्यूम करो एक क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल उसने किसकी शिकार की? तो चलो एक कुत्ते की शिकार की, या हम लोग एज्यूम करते हैं कि उसने एक वुल्फ की शिकार की। ठीक है, किसकी शिकार की? वुल्फ की शिकार की। ओके, नहीं तो चलो थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेता हूं। एक है बड़ा एनाकोंडा, बड़ा एनाकोंडा है, उसने किसका शिकार किया? तो बड़े एनाकोंडा ने एक जहरीले स्नेक का शिकार किया, खा लिया उसने। ओके, और जहरीले शिकार ने, जहरीली जो बेटा स्नेक था, उसने किसका शिकार किया? तो उसने जो जहरीला नहीं था, पॉइजनस स्नेक नहीं था, उसका शिकार किया। और वो बिना पॉइजन वाले ने किसका शिकार किया? तो रैट का शिकार किया। ओके, तो सबसे बड़ा खाना किसको मिला? एनाकोंडा। एनाकोंडा इज अ कंज्यूमर। ओके, जिसको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला वो कौन था? वो था आपका बेटा चूहा, रैट। ओके, रैट को खाया किसने? रैट को खाया बिना पॉइजन वाले स्नेक ने। तो बिना पॉइजन वाले स्नेक में पेट में तो कुछ है, तो वो कौन है? बी। उसके पेट में तो कुछ है ना, उसने कुछ तो खाया है। रैट ने कुछ नहीं खाया, तो रैट इज अ फर्स्ट पर्सन, दैट इज ए, जिसको बेनिफिट नहीं है। बिना पॉइजन वाले को रैट का बेनिफिट है, पॉइजन वाले को बिना पॉइजन वाले का बेनिफिट है, एनाकोंडा को सबसे बड़ा बेनिफिट है। आया समझ में? सो ये चेन है, जीएसटी की भी एक चेन है। किसको बेनिफिट होगा? रैट को बेनिफिट नहीं होएगा, ये ध्यान में रखो। बेनिफिट किसको होएगा? बिना पॉइजन वाला एंड पॉइजन वाला, एंड देन एनाकोंडा। इनके पेट में कुछ तो है, कुछ तो है मतलब आईटीसी। और क्या समझो बेटा, इजी है, अंडरस्टूड? हाँ, फूड चेन को याद करो। रैट ने घास खाया होगा, वो छोड़ दे बेटा, रैट पीछा भूखा है, वो तो बेटा खाएगा, पर वो पहला पार्टी है ना। ओके, यस बेटा, जिसके पास ये जीएसटी नंबर है, नंबर किसको निकालना है, कैसे निकालना है, डोंट वरी, वी डू नॉट हैव इट इन सिलेबस। सो नंबर कैसे निकालना है, 20 lakhs के ऊपर का लिमिट किसको है, किसको नहीं है, बेटा रुको ना रे, समझा दूंगा, पर इंटर में आओ। सब कुछ इधर ही पढ़ोगे तो इंटर में क्या जीएसटी खाक पढ़ोगे? अरे सब्जेक्ट है भाई जीएसटी। आई एम नॉट अ जीएसटी टीचर।
ओके, अभी जीएसटी का नंबर कब लेना है, कौन सा रिटर्न भरना है, क्या करना है, क्यों रे भाई इतना। अभी इंटर ने फाइनल की एग्जाम दे दो। चलो, ओके, हमें सिर्फ एंट्री करनी है फाउंडेशन में। चलो अभी ये जीएसटी के टाइप्स समझ लो। 360 रुपीज, ये भी समझ में आ गया। ये रहने दो, ये कुछ जरूरत नहीं है, प्री जीएसटी। हाँ जी। सो जीएसटी के फीचर्स क्या है। जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई। सप्लाई कौन करेगा, इट्स अ मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर। सो जीएसटी इज लेविड ऑन दैट। Tax is levied only on value added, only on value added. Okay. So you added the value, you have to pay GST. You don't have to pay full GST. Okay. Now GST is a destination based tax. Destination based tax. Now what is the destination based tax? Wait, I will explain it. Okay. For example, suppose if I bought my laptop in Pune and I am doing business in also in Pune. So that laptop I paid GST is within the state because I'm in Pune, I'm paying in the Pune. Okay. So GST, now whatever GST I paid, out of that, how to divide it, that I will tell you. Wait, how to divide it. So whatever GST, no cascading effect, no double effect. You don't have to pay double tax. Okay, 270 itna itta. Okay, so everyone has to pay only on value addition. Only on value addition. Okay, so this is the no cascading effect. बहुत ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं है. And harmonization of laws. Levied मतलब charge. GST charged on supply. Levied मतलब बेटा charge. Yes, very good. What is levied? Levied मतलब किसके ऊपर charge किया गया, तो supply के ऊपर. हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉज. हाँ, अभी ये क्या होता था, सो आई विल टेल यू प्री जीएसटी क्या होता था एंड पोस्ट जीएसटी. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी. लेट्स अंडरस्टैंड. नंबर वन इज अ सेंट्रल जीएसटी, CGST. We will call it as CGST. State GST, SGST. यूनियन टेरिटरी, बेटा यूनियन टेरिटरी वो लक्षद्वीप वाले. अरे बाप रे सर, लक्षद्वीप का नाम मत लो, वो मालदीव का तो लोचा है उधर. ओके, अभी तक अपने को. यस, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरीज बेटा, यू ऑलरेडी नो, चंडीगढ़ है. सो इंटीग्रेटेड जीएसटी मीन्स इंटरस्टेट. इंटीग्रेटेड मीन्स इंटरस्टेट. इट इज विद इन द स्टेट and it is within a state. Suppose if I am living in Pune and if I bought something from Kolkata, so West Bengal से मैंने कुछ buy किया, तो बेटा this is called as interstate. Okay, interstate. Suppose in Pune and if I am buying something from Mumbai, it is within same state. But Ahmedabad, no, not within the same state. Delhi, not within the same state. Okay, so in that case, beta, I will pay interstate GST. Okay, so consumer will, yes, government will take it from you. Okay, so इसको बोलते हैं स्टेट जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी. ये दोनों एक जैसे ही है. यूजीएसटी रहता है या एसजीएसटी होता है. सो एसजीएसटी होगा, या आप यूनियन टेरिटरी में रह रहे हो तो यूटीएसजीएसटी होगा. यूटीजीएसटी, नथिंग डिफिकल्ट. सो इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी. नाउ ये क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी. हाँ बेटा, ये सब ऐड करके नहीं देता गवर्नमेंट, एक ही देता है. आइदर सीजीएसटी एसजीएसटी दो या आईजीएसटी दो. ओके, सो सीजीएसटी एसजीएसटी होगा या आईजीएसटी यू हैव टू पे इन योर बिलिंग.
आइदर CGST SGST लिखा होगा, अदरवाइज IGST लिखा होगा, और IGST के बिल मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ओके, नाउ व्हाट हैपन आई टेल यू. सो सी, मैकडोनल्ड्स और प्रीवियसली मैकडोनल्ड्स, बेटा आप तो पिज्जा खाने जाते रहोगे, या डोमिनोज, ऑल ओवर इंडिया बेटा. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, देयर प्राइजेस आर नॉट फिक्स. उनके प्राइजेस कभी फिक्स नहीं रहते थे. किसके? द सपोज इफ यू आर ईटिंग इट इन कर्नाटका, तो यूर रेट्स माइट बी डिफरेंट. ओके, GST रेट्स नहीं, बिफोर GST. आई एम टेलिंग यू अबाउट बिफोर GST का सिनारियो. ओके, सो वहां पे लिखा रहता था प्राइजेस एज एप्लीकेबल विदाउट GST, एक्सक्लूडिंग GST, बिकॉज एवरी स्टेट हैज इज ओन GST रेट. ये तो आफ्टर मोदी जी बेटा बहुत अपोज हुआ. कांग्रेस बोल रहा था पहले GST लाएंगे, GST लाएंगे, तो बीजेपी अपोज में थी. फिर बीजेपी ने अपोज नहीं किया, फिर क्या हुआ, GST लाया बीजेपी ने. कांग्रेस बोलने लगे नहीं चलेगा GST, ऐसा नहीं. तो ये तो होता है. सो GST किसके बाद आया? मोदी जी के बाद. ओके, सो मोदी जी ने लाया GST. तो GST के पहले का सिनारियो आपको बताता हूं क्या होता था. बिफोर GST क्या होता था. हाँ जी, GST चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड बाय द सप्लायर इज कॉल्ड एज आउटपुट टैक्स. सो सेल्स के ऊपर होता है वो आउटपुट टैक्स, परचेस के ऊपर होता है वो इनपुट टैक्स. यूटिलाइजेशन ऑफ ITC, सर ये बताइए, IGST शुड बी, सर ये तो पल्लेच नहीं पड़ेगा, पहले बिल देख लेते हैं, पहले बिल देख लेते हैं. चलो, तो हमारे बंदे ने एक बिल भेजा है आपके लिए. कहाँ गया बिल? मेल आ गया क्या, चेक कर लेते हैं. हाँ, आ गया. ये देखो, ये हमारे एक रेस्टोरेंट का बिल है. देख लीजिए, देख लीजिए, हम लोग जो कस्टमर से GST लेते हैं. हाँ जी, देखो, डुप्लीकेट, क्योंकि वन ओरिजिनल कॉपी इज विद कस्टमर, नो, वी हैव ओनली डुप्लीकेट कॉपी. ओरिजिनल कॉपी कौन लेके गया? कस्टमर. रिलैक्स प्योर वेज. शॉप नंबर, ये हमारा GST का नंबर है बेटा, चेक कर लेना, हम लोग आ जाएंगे उस पे. शॉप नंबर 28, गगन उन्नति, कात्रज कोंडवा रोड, कोंडवा बुद्रुक, पुणे 411048. GST आइन नंबर फॉर रिलैक्स प्योर वेज. अभी ये GST आइन नंबर इज ऑन नंदादीप फूड्स. नंदादीप फूड्स के नाम के नीचे रजिस्टर्ड है. सो वो अभी बाद में समझेगा. संतोष ओसवाल, मेल, जिन्होंने हमारे से कुछ खाया था. डेट 27/11, 27 इनकी पार्टी ऑर्डर थी. 27/11 पार्टी ऑर्डर आइटम. क्वांटिटी 69 लोग आए थे. तो बेटा, यस, वी चार्ज देम टोटल क्वांटिटी 69, सब टोटल वट एवर द रेट. फूड कॉस्ट थी 265 रुपीज, एंड वी चार्ज देम 2.5% CGST. सो दिस आइटम इज ऑफ 5%. सो सेंट्रल वाले मोदी जी के पास जाएगा. देखो बेटा, अभी सपोज इन यूर स्टेट इफ बीजेपी गवर्नमेंट इज नॉट देयर, सो सेंट्रल में बैठे बीजेपी. ओके, और इन यूर स्टेट एज्यूम करते हैं देयर इज अवर इन महाराष्ट्र शिवसेना था प्रीवियसली. अभी तो हमारे इधर राजनीति बेटा बहुत डेंजरस है, सो वी नॉट टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. हाँ, तो अभी सेंट्रल वाले they are collecting 2.5%. Okay, so 457 we pay to Modi ji. ठीक है, and SGST 2.5% we will pay to एकनाथ जी, एकनाथ शिंदे जी हमारे इधर के. ओके, सो 2.5% उधर जाएगा, 2.5%. और फिर स्टेट और इसमें फिर झगड़े तो होंगे ना भाई, सास बहू है ये लोग सास बहू है. ओके, एक बोलेगा मुझे भी पैसा चाहिए, एक बोलेगा मुझे पैसा चाहिए, मुझे सेंट्रल चलाना है, मुझे तो पूरा इंडिया चलाना है. सो ही विल कलेक्ट. सो झगड़ा मत कीजिए, 2.5% तुम रख लो, 2.5% तुम रख लो. ओके, डोंट, वी डोंट वांट एनी फाइट. ओके, सेंट्रल वाले कितना लेंगे? 2.5%. 50-50, तेरा 50 मेरा 50, कस्टमर की वाट. ओके, सो CGST SGST अंडरस्टूड. सो दिस इज हाउ. सो सी, विदाउट GST बिल इज 18,285, and with GST bill is 19,199. So we charge it to Santosh bhai. We charge it to Santosh bhai.
Percentage are fixed beta. Now this 5%, 9%, see, if it is a day to day need, then percentage are less. Then percentage are less. So who decides it? Government decides it. Sir, this is all over India, rates are same. If you eat now burger in India at Kolkata, and suppose if you are eating burger in the McD of Pune, so beta, you have to pay same GST. But before that, no. Eknath ji is saying it's my power. I will charge GST according to me. VAT. प्रीवियसली ऐसा कुछ नहीं था. ठीक है, हर गवर्नमेंट बोलता था मैं मेरे हिसाब से लूंगा. कर्नाटक वाले बोलते थे हम हमारे हिसाब से लेंगे. महाराष्ट्र बोलता था हम हमारे हिसाब से लेते. कस्टमर की बैंड बजा दी इन्होंने. तो फिर क्या हुआ? फिर सबने क्या बोला? अभी जो महाराष्ट्र का रेट होएगा वही रेट कर्नाटक का होएगा. सर इसीलिए दारू के ऊपर अभी भी जीएसटी नहीं है. क्योंकि जीएसटी, दारू मजा मारने के लिए गोवा जाते हो तो गोवा में क्या होगा, अल्कोहल का रेट जो है उसके ऊपर आज भी वैट है. क्योंकि वो जीएसटी में नहीं आएगा, क्योंकि गोवा में सस्ता मिलता है. गुजरात वालों के पास है ही नहीं. महाराष्ट्र में मिलेगा, रेट एक्स्ट्रा होएगा. ओके. सो गोवा के कंपैरिजन में तो वहां पे वो लोग कम वैट लेते. वो बोलते हैं यार टूरिस्ट लोग है, पीने दो, एंजॉय करने दो, हमारा उसी के ऊपर तो पूरा ये चल रहा है. तो वो जीएसटी के अंडर लाया नहीं. पेट्रोल इज ऑल्सो नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी. Why? Every state has its different rates. And whenever it is under different rates, तो बेटा then जीएसटी जो है वो हर एक का अलग अलग होगा. तो जीएसटी होएगा ही नहीं ना, उसका रेट क्या होगा? वो वैट होएगा. वो वैट होगा, वैल्यू एडेड टैक्स. इट इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी. जीएसटी होगा तो ऑल ओवर इंडिया रेट इज सेम. Amount might be different. Okay. Profit you will decide, but rates 5%. So if you are eating pav bhaji in the Pune, my rate might be different, but GST percentage, and in Kolkata, but GST percentage are 5% here also and in Kolkata also. So might be different amount. Amount might be different according to your profit margin, but percentage are same. तो जीएसटी का परसेंटेज सेम होगा. समझी गयो? इजी छे जीएसटी. हाँ जी बेटा. देखो, बच्चों को इंटरेस्ट किस में पता है? व्हाट ही ऑर्डर्ड. जीएसटी परसेंटेज में इंटरेस्ट नहीं है. संतोष ने क्या ऑर्डर किया था सर? भाई खाना ऑर्डर किया था 69 लोगों का, कुछ मंगवाया रहेगा, पनीर होगा, चपाती होगी, उसका ये रेट है. इंटरेस्ट इसमें नहीं है. जीएसटी समझ में आया? राउंड ऑफ मीन्स बेटा गवर्नमेंट को क्या करते हैं, अभी बिल में ऐसा कोई पैसा लेके देगा क्या बेटा? तो वो अभी ये पॉइंट 13 तो 26 पैसा कौन निकाल के देगा? 26 पैसा को माफ कर दो संतोष को. उसको बोलते राउंड ऑफ. सर आज ज्यादा मजा आया. किंजल बोल रही है आज बहुत मजा आया. हाँ, वन मोर टाइम वरुण, वन मोर टाइम लेक्चर देख बेटा. अभी वापस से एक्सप्लेन करूंगा. पागल हो गया मैं, अभी इतना नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा. तू जीएसटी का बेटा वापस से लेक्चर देखना. नित्यश्री. नित्यश्री की क्वेरी क्या थी? नित्यश्री, आई डिडंट रिसीव योर क्वेरी. सर ऑलवेज स्टेट टैक्स एंड सेंट्रल स्टेट टैक्स सेम परसेंटेज. यस बेटा, ऑलवेज ऑलवेज. नाउ सपोज इफ संतोष is living in Ahmedabad, Gujarat mein, and he ordered in the Maharashtra. So now what we have to pay him? So we will charge him IGST. हम लोग उसको क्या चार्ज करेंगे? इंस्टेड ऑफ CGST एंड SGST इट विल बी इंटर स्टेट GST. क्या पे करेंगे? इंटर स्टेट GST he will pay. So it is not because he will say, sir, Maharashtra government, वी आर लिविंग इन द गुजरात. सो पैसा किसको देना है भाई? डायरेक्ट मोदी जी को दे दे. मोदी जी विल डिस्ट्रीब्यूट इट. किसको देंगे? स्टेट वालों को दे देंगे. मोदी जी विल गिव इट टू स्टेट. कौन सी स्टेट? उनको झगड़े करने दो भाई, हम लोग आईजीएसटी कलेक्ट कर लेंगे. वी विल कलेक्ट आईजीएसटी. ओके. एंड मोदी जी विल डिस्ट्रीब्यूट इट. सो इफ इट इज इंटर स्टेट तो फिर अपने को क्यों टेंशन लेना है ना? गुजरात वाला को भी देना नहीं, महाराष्ट्र वाले को भी देना नहीं, मोदी जी को दे देने का. अंडरस्टूड? So that is interstate. IGST. बिपिन सिंह बोल रहे हो बहुत अच्छे से समझा आया सर.
सुनील कुमार बोल रहा है, सर आप बहुत अच्छे से समझाते हो। थैंक यू बेटा सुनील जी, आज ही समझा मुझे। यस। सो जीएसटी भी स्टार्ट कर दूं क्या मैं, इंटर में आने तक? तो जीएसटी भी शुरू कर देता हूं बस। चलो, आईजीएसटी इज डिफरेंट बेटा, इंटर स्टेट, इट इज नॉट स्टेट और central, it is different. And now beta please understand. So I told you about input credit, output credit, everything. Now beta it's time to take a break. Break के उस पार हम लोग मिलेंगे. So now you understood what is GST. नहीं, wait. ब्रेक के उस पार हमें एंट्रीज करनी है, बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू समथिंग. सीजीएसटी और एसजीएसटी कैन नॉट बी यूटिलाइज अगेंस्ट इच अदर. हाँ जी बेटा, ये याद रखो. सीजीएसटी मोदी जी को ही जाएगा, एसजीएसटी हमारे एकनाथ भाई को ही जाएगा. ओके, वी कैनॉट यूटिलाइज विद ईच अदर, यू कैनॉट टेक अ सेट ऑफ विथ ईच अदर, दिस इज अ रूल. ओके, नाउ दिस इज अ रूल. तो ये अभी मैं इतना डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा आपको, बहुत डिटेल में हो जाएगा. ये मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल बनाए थे, पर बेटा इतना टाइम भी नहीं है. जर्नल एंट्रीज फॉर जीएसटी, सब परचेसेस. परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस के साथ साथ इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी टू क्रेडिटर्स. एंड सेल किया तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी. आउटपुट को क्रेडिट बैलेंस था, इनपुट को डेबिट बैलेंस था. सो आउटपुट इन सीजीएसटी, एसजीएसटी will be set off with each other, and how we are going to pass the entry, that I will tell you after the break. Okay, एक छोटा सा पार्ट रह गया है. प्री जीएसटी. हाँ, प्री जीएसटी. वैट और जीएसटी का डिफरेंस. assume GST is 18%, assume excise duty is 12%. So see, on manufacturing previously you have to pay excise duty. चाहे चाह बोलो, GST 18%. सो प्री जीएसटी बेटा फॉर मैन्युफैक्चरर, if 1,000 रुपीज का टैक्सेबिलिटी था, तो ही विल पे टू एक्साइज डिपार्टमेंट 120 रुपीज एंड वैट डिपार्टमेंट 18%. 1,120 into 18%. So VAT department is charging them on 1,120. Oh, two times VAT department. Now goods excise duty. VAT Maharashtra state. Excise duty by central government, VAT by pre-GST scenario. Then beta 1321.26 has to pay to the trader. ट्रेडर इतना पे करेगा. फिर क्या हुआ, एक ही कायदा, एक ही रूल, ओनली 18%, 1180, नो टैक्स ऑन टैक्स. सो हियर ये जीएसटी जो है वो पे करते थे. Pre GST, you have to pay two different taxes. Only and only one tax, goods and service tax. एक ही टैक्स, एकदम खटाखट, ज्यादा कोई टेंशन लेने का नहीं, एक ही टैक्स पे करने का. ओके सर, अंडरस्टूड. प्री जीएसटी, ट्रेडर विल पे वैट 324, बट ही कैनॉट टेक अ बेनिफिट ऑफ सीएसटी. एक्साइज ड्यूटी का बेनिफिट नहीं लेता था, वो 201.6 का बेनिफिट लेता था, ओनली 201.6. हाँ, एक्साइज का बेनिफिट नहीं, नो बेनिफिट ऑफ एक्साइज, ओनली वैट का बेनिफिट. ओ माय गॉड, हियर जीएसटी का बेनिफिट 270 माइनस 180, बिकॉज ओनली वन टैक्स वन नेशन, वन टैक्स वन नेशन. ओके, सो पहले ऐसे बहुत सारे टैक्सेस थे, एक्साइज ड्यूटी, वैट, कस्टम, कस्टम आज भी है, सर्विस टैक्स अलग से. भाई क्या था, सब इतना पेमेंट टैक्स में. बेटा बिजनेस करे क्या ना करे, अभी वन नेशन वन टैक्स. ओके, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेरी इजीली. एंड यू कैन नॉट टेक वैट का बेनिफिट विद एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज का बेनिफिट विद वैट. सो इसमें भी नहीं, सो यू हैव टू पे दैट ड्यूटी एक्स्ट्रा, वैट ड्यूटी एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा. यस, मैन्युफैक्चरर मर गया था. ओके, ओके.
सो दिस इज प्री जीएसटी एंड पोस्ट जीएसटी। ब्रेक के उस पार वी आर गोइंग टू सी the concept of entries now. So here we have finished with the GST part. So till now, what you understood, there are three GSTs. One is CGST, when you are selling it within state. SGST, एक जाएगा मोदी जी को, एक जाएगा एकनाथ शिंदे जी को। एकनाथ शिंदे जी अवर बेटा अवर चीफ मिनिस्टर, ओके। सो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, तो उनके पास जाएगा, महाराष्ट्र स्टेट के पास जाएगा। एंड इंटर स्टेट होगा, यदि महाराष्ट्र का बंदा गुजरात में माल बेचेगा तो IGST पे करना है, CGST और SGST नॉट एप्लीकेबल, ओके। एंड किसका बेनिफिट कैसे लेना है वो होगा ब्रेक के उस पार। टेक अ ब्रेक चिराग जी।
चलिए, let's start once again. Beta, welcome back once again. I don't think today we can finish with the unit 2 because today I think three illustrations will take a time. So let's start. Let's start once again. Yes, beta. Now I'm not going to wait. Illustration number 8 in your study material, page number. Purchase goods from Sahil, 50,000. CGST 9% each. So purchases 50,000. Purchases को डेबिट होगा. Now input CGST. Now this is, you can write on the question itself, input. What you are going to write? Input. So 50,000 into 9%, 4,500, 4,500. So total is what you are paying? 59,000. So purchase debit. Now what will be the entry? Purchases is expenses. So purchases account debit, बेटा same entry, only गवर्नमेंट को कितना पे करना है तो उसके पहले यू ऑलरेडी पेड, सो इट्स योर एसेट, लाइक एसेट यू ऑलरेडी पेड टू गवर्नमेंट 9%, 4,500 इनपुट सीजीएसटी and input SGST, you paid 4,500. So total amount payable to Sahil. Sahil is your creditor. Sahil ये अपना creditor है, expense है. Or you already paid, so you can take a benefit of this. So you can call it as asset. You can call it as asset and you can credit it afterwards. Okay. Very simple. 59,000. So first illustration, first example में over. Second one. Now if there is a trade discount, so trade discount means 40,000 minus 10%. So discount 36,000 and on that 9% each. बेटा परचेस होगा साक्षी, इफ देयर इज अ परचेस तो इनपुट जीएसटी आएगा. वी पेड इट. सो हमने परचेस के ऊपर हमने पे किया तो इनपुट, और सेल्स परचेस के साथ इनपुट होगा एंड सेल्स के साथ आउटपुट होगा. ओके, सो रिमेंबर परचेस होगा तो यू पेड इट एंड सेल्स तो यू हैव टू पे टू गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट को पे करना है, सो आउटपुट होगा. ओके, एंड यू कैन टेक अ बेनिफिट ऑफ दिस. You can take a benefit of this. So input मतलब ITC is available. ITC is available. चलो. So 36,000 after discount. 9% each. So 36,000 के ऊपर 9%. 3240, 342, 3240. 20,000 immediately payable cash and balance का SAM creditor. So 36,000. 42,480 minus 20,000. So SAM creditor is for 22,480. Okay, so purchase account debit after trade discount 36,000. Input GST 3240. Input CGST 3,240. Input SGST 3,240 to SAM 22,480 we calculated, and to bank to cash 20,000. Bank or cash 20,000. Easy. Next, goods costing rupees 20,000 withdrawn for personal use. Drawings. If goods purchase paying CGST and SGST. Now we will reverse this. अभी हम लोग इसका रिवर्स करेंगे. रिवर्स परचेसेस
and reverse input credit also. इनपुट को भी क्रेडिट दो. परचेसेस रिवर्स करो तो अपने आप इनपुट और ये भी रिवर्स हो जाएगा. सो आईएमपी एंट्री इन केस ऑफ ड्रॉइंग्स 20,000. व्हाट इज सीजीएसटी रिवर्स? सीजीएसटी क्रेडिट, एसजीएसटी क्रेडिट. 20,000 into 9%, 1800, 1800. So see the entry. Drawings account debit 23,600 to purchases 20,000. This is the IMP entry. And reverse your GST. What you paid. Reverse your CGST and SGST. ये reverse कीजिए. So purchases reverse. तो CGST, SGST also reverse. Okay. Very simple logic. If purchases reverse, then CGST and SGST also reversed. Next. Paid rent 20,000. So CGST 1200. Sorry. हाँ 1200. SGST 1200. Rent to Gagandip. So rent account debit 20,000. Yes, there is a mistake, beta. In the study material mistake, you do this 30,000. Rent को 30,000 करो. Mistake. Paid rent 30,000. Yes, change करो बेटा. Study material पे change करो. Rent account debit. Rent account debit 30,000. एक ही मिनट. हाँ सो रेंट को चेंज करो. क्वेश्चन में चेंज इट. स्टडी मटेरियल मिस्टेक बेटा एंड वी विल रेक्टिफाई इट. डोंट वरी, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. सो 30,000. इनपुट CGST 1,800. Input SGST 1,800. So instead of purchases, now it's rent to Gagandeep 32,000 or 33,600 being rent paid to Gagandeep. And Gagandeep to bank. इधर पेड के बदले में पेबल लिखो. पेबल रेंट. रेंट पेबल टू गगनदीप. रेंट पेबल टू गगनदीप. Next. Goods costing rupees 5,000. Return to Sam. Purchase return. 5,000 के ऊपर 10% is 4,500. So CGST and SGST also reversed. So Sam account debit. So 4,500 पे 9%. 405, 405. So purchase return account debit. Sorry, Sam account debit. This is a balancing figure. To purchase return 4,500. To input CGST 405. To input SGST. So reversed. Reversed. Input को reverse किया. Easy.
Purchase furniture 44,800 including IGST. Now beta, including IGST. Now let's understand. 100, 12, 112. This is called as reverse calculation. So 44,800 is including SGST, IGST. So question mark. Okay, cross multiplication. So 44,800 into 100 divided by 12, 112, 40,000. And this is 2,800. 4,800. Sorry, my mistake. 4,800. So furniture account debit, input IGST account debit 40,000 to bank 44,800. This is called as reverse GST. This is again IMP. Including means 100, 12, 112. So below 112, you will write 44,800. Easy. Very good, Arihanan. Purchase machinery 1,40,000 into 9% each, 12,600, 12,600. So 1,40,000, 165,200. So balance is 65,200. So entries, machinery account debit 1,40,000, input 12,600, input SGST 12,600 to bank 1 lakh and bacha hua to Symphony Industries 65,200. So here we have finished with illustration number 8. Any entry is not understood, beta, you can ask me. Any entry you're finding difficult? Any entry you are finding difficult, can tell me. एकदम easy है. चलो बेटा जल्दी बोलो. जो भी एंट्री आपको डिफिकल्ट लगे. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड अनुज कुमार. So which are IMP entries? Drawings, reverse your CGST, SGST. Then furniture including means 112, 44,800. तो 100 के लिए कितना? Easy है बेटा. Please, this is the new thing which is added by the institute. So please do not keep this in option. ये ऑप्शन में मत रखियो. बेटा आदित्य, देख 100 रुपया, 12 रुपया जीएसटी, IGST, तो 112 हुआ. 112 के नीचे 44,800. तो ये कितना? $4,800. So machinery account debit और furniture account debit 40,000. IGST input account debit to party account. Rent account debit. So that is the wrong amount by institute study mat. So now we will rectify it. Don't worry. Chalo, come to illustration 9. Sold goods. Now this is output GST. Sold है तो output है. Okay. Sold goods. Bank account debit. Output GST 6% each. 3,000. So bank account debit balancing figure. To sales 50,000
to output CGST 3000, to output SGST 3000, and these are the entries. Very simple. So in real life also, you can easily pass these entries. Okay. Very good, beta. Anuj Kumar, very good. Sold goods to Surjit, 28,000, including CGST and SGST, 6% each. Including. मतलब 12, 112. 28,000. So including is very important question, beta. Three thousand, 1500, 1500. So 25,000. So बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, सुरजीत अकाउंट डेबिट नहीं तो सुरजीत अकाउंट डेबिट 28,000 to sales only 25,000. Reverse calculation. To output GST 1,500. To output SGST 1,500. Included होगा तो 112 के नीचे 28,000 and cross multiplication. Easy. Received only 25,200 from Surjit. Oh, 28,000 के बदले में, so discount is 2,800. अभी देखो IMP एंट्री है बेटा, दिस इज IMP. सी द एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट 25,200. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,800. टू सुरजीत 28,000. नो नीड टू रिवर्स एनी एंट्री. सुरजीत को बोलेंगे भाई डिस्काउंट का सेट ऑफ लेना नहीं है. डिस्काउंट का सेट ऑफ लेना नहीं है. इधर लिख देना, यहां पे भी गलती हुआ है. 2,800. बेटा एक बार आगे की एंट्रीज करो चलो. चलो नाउ यू डू नेक्स्ट एंट्री बेटा. फास्ट. 6 and 10 you try. 6 and 10.
Yes, beta. So what is the entry? See, beta, in fifth number, you can pass entry simply discount allowed to debtors also. No problem in that. But you can reverse GST also. But now institute beta वो complicated हो जाएगा. So you can reverse that output GST, but that will be more complicated. तो छोड़ दो उसको. Okay? Yes. Next one. Kapil sold goods to Kapil 30,000. IGST is very simple 3,600. 12,000 मिला. So 33,600 minus 12,000. So balance is 21,600. So bank account debit 12,000. Kapil account debit 21,600. To sales account 30,000. To output IGST 30,000. 3,600. Okay. So this is very simple entry. Kapil was allowed 5,000 as goods supplied to him were defective. Now this is very important. So you can reverse the entry, rebate account debit. See 100, 12, 112, 5,000, reverse, rebate account debit, output GST 600 on that 12% to Kapil 5,600. This is the IMP entry. Rebate entry is IMP. Sold goods to Manpreet is very simple. 1 lakh may say 20% discount. So this is 80,000 and charge IGST 12%. So 80,000 into 12%, 9,600. So Manpreet account debit 89,600. ओके यहाँ पे मेरा गलत हुआ है. It's 89,600. 89,600. Rebate is discount beta. Rebate is discount. Rebate is discount. Okay. Rebate is discount. हाँ बेटा बाद में करेगा वो पेमेंट. 20,000 return to Manpreet. List price means before discount. Before discount. So less 20%. Sorry, 10%. How much discount we allowed him? 20%. Sorry. List price means before discount. List price means before discount. So 16,000 we returned him. Output GST reverse it to Manpreet 17,920 into 12%. 1920. Okay. So output GST beta cancel. Received commission 15,000. Cash account debit 900 900. So this is 15,000 900 900. Output GST and cash account debit. Commission is your income. And here we have finished with ninth number, second illustration, ninth number of GST. And last question, beta.
सोल्ड गुड्स टू मुकेश 6% ईच है. सो 50,000 minus 20%. So 40,000 and 40,000 into 6%. So 6% means 2,400 GST each. So sold goods to Mukesh, Mukesh account debit 44,800. Very good. To sales account 40,000. To output GST 2,400. To input output as GST 4,800. So this is discount. Yes, very easy. 1 lakh minus 20% discount 80,000. 80,000 into 6%, 4,800 each. So this is, yes, Mukesh account debit. See beta, we can pass two entries. Two entries कीजिए. Mukesh account debit. Mukesh account debit beta. To sales. How much is the sales beta? Sales is 80,000. To output CGST, output SGST 4,800 each. 88,800. Okay. Then bank account debit. Discount account debit बेटा 80,000 का 5%, 4,000. To Mukesh 88,800. 84,800. बेटा इंस्टीट्यूट ने एक ही एंट्री किया है. इंस्टीट्यूट पास ओनली. सॉरी हाँ बेटा 80,000 into 12%. Sorry, this is 89,600. Sorry, this is my mistake. 89,600 minus 4,000. हाँ जी. So entry is, see बेटा one more time. Mukesh account debit to sales 80,000. To output GST, CGST and SGST 4,800, 4,800. So Mukesh balancing figure 89,600. Out of 89,600 बेटा you collected 4,000 का डिस्काउंट दिया आपने. 89,600 सॉरी. सो आपका डिस्काउंट 4,000. So balancing figure 85,600. So institute passed only one entry, but Sanket sir passed two entries. Mukesh account debit, two sales, two output CGST, two output SGST, and then bank account debit, discount account debit to Mukesh account. Very easy. Now this is very easy for you. 1,50,000 less 20% discount. So 1,20,000. Mukesh account debit, two sales 1,20,000, two CGST output and output SGST 1,20,000 into 6%, 7,200, 7,200. So 134,400. Then bank account debit, cash account debit, discount account debit. Now see, discount is 5% into
1,20,000. 6,000 to Mukesh. 134,400. 128,400 का सी, सॉरी, 1,20,000 का 60% is received. So 1,20,000 into 60%, 72,000. 72,000 का 5%, 1,20,000 का 5% is discount. एक्चुअली अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे हिसाब से गलत हो गया है. मैं बताता हूं आपको मेरे हिसाब से क्या चाहिए. एंड आउट ऑफ दैट डिवाइड बाय 4 इंटू 3. देखो, उन्होंने 6,000 डिस्काउंट अलाउड लिया. नाउ आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 60% इज रिसीव्ड, आउट ऑफ विच 3/4 इज रिसीव्ड बाय चेक. तो देखो, 1,20,000 प्लस 7,200 प्लस 7,200, सो 134,400 माइनस 6,000 इंटू 40%, 51,360 प्लस 6,000 किया 57,360 माइनस 134,400 इसका टोटल है, माइनस 6,000 माइनस 51,360, 77,040 इंटू 3/4. यस, चलो समझाता हूं बेटा. ये अभी ये थोड़ा सा टेक्निकली रॉन्ग है, बट ठीक है. अभी सी बेटा, इंस्टीट्यूट ने कैसे एंट्री किया है. बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. सेल्स इज इजी टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST. अभी सेल्स कितना है. हाँ, दिस इज वेरी सिंपल. 1,20,000, 7,200, 7,200. ओके. एंड डिस्काउंट इज बेटा 1,20,000 का दे हैव गिवन डायरेक्टली 5% डिस्काउंट. अब ये मेरे हिसाब से गलत है थोड़ा, क्यों मैं बाद में बताऊंगा. 6,000. नाउ टेक दिस टोटल माइनस दिस टोटल. 1,20,000 plus 7,200 plus 7,200 minus 6,000. So what is the balancing figure? 128,400. बेटा आज प्रैक्टिस करना पड़ेगा. 128,400 is a balance. 128,400 का 60% is received. So 40% is not received. So into 40%, 51,360. And 1,28,400 का 60% का 3/4 you received by check, and 1,28,400 का 60% का 1/4 you received by cash. So take on calci. 1,28,400 into 60% divided by 4 into 3, 57,780, and 1,28,400 into 60% divided by 4, 19,260 by cash.
Very simple question. And here we have finished with all GST problems. So बेटा this is required by the institute. जो entries है आप लोग अच्छे से कर लेना. This is very important session. GST ka. I hope you have done with all these illustrations. If you have any query, I will take 1 hour lecture. Afterwards, beta, I will ask for the one extra session on Sunday. तो एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है चैप्टर नंबर 2 का और चैप्टर नंबर 7 का लास्ट यूनिट 7 का दैट विल डू इट ऑन द नेक्स्ट डे. बेटा आई नो टुडे सेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट इफ यू गो थ्रू वंस ऑल दिस सेशन इट विल बी इजी बेटा. ओके टेक केयर हैप्पी अगेन बेटा राम जयंती बेटा आपको सबको यस और हम लोग मिलेंगे अभी नेक्स्ट टाइम. थैंक यू टेक केयर बाय बाय.